मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी। और अब हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं गौरान धवनलाल। Thank you, Amrish, and Deepshikha. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Government extends Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for another 5 years. Free food grains to 81 crore people. Nifty reclaims bound 20,000 after 47 trading sessions. Sensex closes at 66,901. Nifty settles at 20,096. And crude oil edges higher today. Brent trades close to $82 per barrel in global crude market. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इसके तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। निफ्टी ने 47 कारोबारी सत्रों के बाद फिर से 20,000 का आंकड़ा पार किया। सेंसेक्स 66,901 अंक, जबकि निफ्टी 20,096 अंक पर बंद हुआ। और कच्चे तेल के मूल्यों में आज बढ़त दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमत $82 दर्ज की गई। Let's take a look at our first story of the day. The government has extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for another 5 years from the 1st of January 2024. Under the scheme, 5 kilogram of free food grains are being provided per month to over 81 crore poor in the country, and Antyodaya households will get 35 kilograms of free food grains per month. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said this is a historic decision that places PMGKY among the world's biggest social welfare schemes aimed at ensuring food and nutrition security at an estimated cost of 11.80 lakh crore rupees over a 5-year period. Deepshika, continuation of free food grains under this scheme. Aim is to strengthen accessibility, affordability and availability. So historic decision in, of course, providing food grains also, but in terms of how we're actually seeing it wanting to move towards a developed country, a developed economy, because food security and a life of dignity being critical. Definitely. The whole idea is the main scheme, if you remember, it was introduced during a pandemic in 2020 as an emergency measure. And now it has been subsumed with the National Food Security Act. The whole idea is to ensure that food security, food does not sort of enhance poverty, and when we've seen the numbers sort of people come out of poverty, or in fact we've seen COVID did not push people into poverty, it was largely because of these schemes. So the idea is to, while we tread on the path to become a developed country, we ensure that the marginalized do not suffer from any kind of shortage or any kind of issue with regard to food supply. And that is what is government trying to ensure through this mission. Right. So, invariably, I think every scheme, there are two sides to it, and some analysts also say that we should be looking at the cost of this, cost of the exchequer. So in terms of a cost-benefit analysis, and of course social benefits, humanitarian benefits, and I think economic benefits to many households, more than 81 crore, are there. How do you see this?
I think the cost of the scheme, and as the government has sort of specified, it would cost the government about 11.8 lakh crore for the next 5 years. So if you look at the food subsidy historically, national food security, and also there was another scheme during COVID, which was an emergency measure. So now what we are trying to do is we've merged those schemes. So in some sense, I think this is an expenditure which probably the government will be able to manage for some time right now. But definitely going forward, a balance needs to be struck between, a social welfare, social obligations of the country, towards the citizens, and also the economics of it, as to how long will the country sort of need to do this. And also because we are also investing in capital expenditure. Government itself has a huge capital expenditure program which has potential to lift growth, and more and people, as growth improves, as more and more people come out of poverty, they find employment, I think schemes like this would become less relevant going Like a forward. virtuous circle will start. Exactly. लेकिन अगर दीपशिखा जी हम इसको जैसे आपने अभी कहा भी विकास के कोई जो समग्रता की दृष्टि से देखें तो अगर मुफ्त अनाज लगातार दिया जा रहा है वो भी इतने लंबे समय तक, तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसको कहीं डिरेल तो नहीं कर रहा, मतलब क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है और 5 साल तक हम इसको इतने सारे लोगों को खर्च कर रहे हैं. देखिए, जो प्रोग्राम है उसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी था उसमें भी सस्ते दामों पर ये फूड ग्रेन जो है लोगों को मुहैया कराने की बात थी, लेकिन सरकार ने ये अपने ऊपर ले लिया है, कहा है कि हम 5 साल तक इसको मुफ्त में लोगों को अनाज दिया जाएगा. तो जो भी हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, अगर ग्रोथ को भी देखें तो थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा उथल पुथल है अभी भी अर्थव्यवस्था में. तो सरकार इसके मद्देनज़र मुझे लगता है सरकार ने एक क्लियर रोड मैप जो है वो दे दिया है कि 5 साल तक तो हम ये मुफ्त अनाज मुहैया कराएंगे, उसके बाद का आगे देखा जाएगा. लेकिन कोशिश ये है कि इस दौरान और मेजर्स भी लिए जाएं जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाएंगे, जिससे और आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होगी. तो इसके दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स हैं. आई थिंक जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़ा तबका जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है. जी, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार ने जो योजना शुरू की थी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मतलब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड हो. उससे पहले हर स्टेट वाइज राज्यों में अलग अलग राशन कार्ड हुआ करते थे. इस योजना से भी आपको लगता है कि कितना लाभ इस जो मुफ्त अनाज की योजना है उसके कार्यान्वयन में किस तरह का लाभ मिला? बिल्कुल, देखिए इसमें जो ये योजना है एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड की, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है पैंडेमिक के दौरान शुरू हुआ था, क्योंकि उस दौरान दिक्कतें आई थी. लोग जब घर गए तो वहाँ पे राशन कार्ड नहीं था उनके पास और वो नहीं ले सकते थे. तो चूंकि अब ये मुफ्त अनाज की योजना है तो जिसके पास भी राशन कार्ड है वो जा कर के इसे ले सकता है, इसको अवेल कर सकता है. तो इसमें ये है जो एक्सेसिबिलिटी है लोगों के लिए, जो इस योजना के तहत लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़ गई है. कहीं पर भी वो जाते हैं तो उनको ये सुविधा है कि उसी राशन कार्ड पे उनको अन्न मिल जाएगा. Right. And to be fair, I think the other things also like the PDS, the system, and also money, direct bank transfers, I think all this is somewhere taking us closer to our final goal of equity and moving the country together. Absolutely. Right, absolutely. So listeners, stay tuned. We'll be back shortly with the Sensex and of course much more news. But right now we're going for a short break. मिलिए एक और दान बहादुर से. इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है. प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की. मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना. और आप हाथ धो लो पैसों से. गारंटीड रिटर्न्स धोखा है. स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने. हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर.
मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और चलते हैं शेयर बाजार की खबर की ओर। देश के शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़त का क्रम जारी रहा। विश्व से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और बड़ी कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18 सितंबर के बाद पहली बार 20,000 के आंकड़े को पार कर गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 727 अंक यानी 1.10% की तेजी के साथ 66,901 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.04% की बढ़त के साथ 20,096 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.78% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.40% तक बढ़ा। The equity benchmarks gained for a second straight session today, with the Nifty surpassing the 20,000 level for the first time after September 18th on positive global cues and gains in heavyweights. The BSE Sensex rose 727 points or 1.10% to end at 66,901. The NSE Nifty gained 206 points or 1.04% to settle at 20,096. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.78% and the small-cap index added 0.40%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 26 companies appreciated while 4 companies declined. Axis Bank jumped 3.92%, M&M rose by 3.38% and Wipro added 2.32%. On the other hand, Nestle India declined 0.57%, Titan fell 0.49%, and Bajaj Finserv lost 0.34%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors gained while 2 witnessed losses. BankX jumped 1.67%, auto sector gained 1.57%, and the IT sector rose by 1.33%. On the other side, the realty sector declined 0.45% and consumer durables fell 0.09%. The overall market breadth was positive as the shares of 1,916 companies appreciated while those of 1,786 declined. A total of 139 companies remained unchanged. Deepshika, wanting to understand from you and also share another figure at the historic 4 trillion market cap milestone being reached by the economy. So is that the growth story? Well, of course, will continue, but any cautionary remarks? Well, as of now, market looks very fairly positive, and I don't would like to bring caution. Caution, of course, everyone needs to exercise caution because it is a stock market, and it is prone to a lot of any development can impact it. But as of now, if you look at the cues which are impacting the market, and they all seem very positive. We've had a statement from a US Fed official which was very dovish. Now the indications are maybe, the higher for longer, which had begun to weigh so much on the markets globally and also on the Indian markets to an extent. So it looks like maybe there could be a rate cut earlier than expected if the numbers sort of fall within the expectation limits on inflation front. So that factor is playing heavily, and we've seen that impacting the global markets also. So India, of course, would be a huge beneficiary, especially now with dollar also sliding a bit. And in terms of the macro cues, if you look at the crude, crude also is not sort of it's remaining very sweet. So it's like a sweet story. I think India is in that moment at this juncture, wherein the domestic growth stories also sort of seem to be holding up. We've seen a lot of, analysts and a lot of research reports come out which have upgraded the growth. So all along, I think as of now, for short term, it definitely looks a very positive story. Right. So when we see these macro factors that you spoke about, and you said it's a sweet story for India, but we're all, as we like to believe, linked at the hip and interconnected. And we'd always said that India actually has kind of,
defied the trend, so to say, when the global economy was in the doldrums or very, very volatile. We were volatile, but we were moving up slowly and steadily. How do you see the global economy also now coming up? Because for the story to become sweet on a larger scale, how do you see the European and the US markets and everything now? Are they going to hit a sweet story soon? So if you look at the US, I think the concerns around inflation, the numbers, of course, will actually state what is going on there. But if you look at the concerns around inflation, inflation has begun to slide. And if you look at the consumption data in the US, that remains very robust. So definitely, the concerns around that the very tight interest rate regime or, higher for longer will sort of come as a sledgehammer and hurt the economy very much. That definitely is not happened. So I think the regulators have ensured a soft landing. US, of course, Europe, of course, there are pockets of concerns where inflation still remains a concern and, of course, growth remains a concern. But overall, if you see once the US economy starts turning in, that will start impacting. And also the other factors, like, if the crude remains within reasonable level, if the supplies remain reasonable, I think the inflation concerns will sort of mellow down and the growth will start regulators in Europe also would sort of back down on interest rate increases, and that will have an impact even there. So global story also, I think it is looking much better than it was looking a few months back. But of course, fingers crossed, because we've seen 2 geopolitical crises in very short period of time. So fingers crossed on that account. But definitely very positive story as of now. Right. लेकिन दीपशिखा जी, अगर हम इस पूरी स्टोरी को रिटेल इन्वेस्टर्स की लिहाज से देखें तो उनके लिए आपको शेयर बाजार में क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं, ख़ास तौर पे जब उसका स्तर इतना ऊंचा हो गया है? तो क्या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको वेट करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करके जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कुछ मुनाफा कमा लेना चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, जो रिटेल निवेशक हैं उनको हमेशा जब लगता है कि एक जिस स्तर पे वो घुसे हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गया है बाजार, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े स्तर पे करना चाहिए. लेकिन इस समय जो बाजार की स्थिति लग रही है और जो दिखा रहे हैं, जो ऐसी आशा की जा रही है कि आगे जो है बाजार और आगे ऊपर जाना चाहिए. जो फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं भारतीय बाज़ार के लिए, विश्व के बाज़ार के लिए भी. तो कुछ इंतज़ार भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो. और प्लस उन क्षेत्रों को देखें, वो अगर उनको एंट्री पॉइंट मिल रहा है उन क्षेत्रों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे एम्फसिस है और जहाँ पे असर दिख रहा है, जैसे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप देखिए कैपिटल गुड्स में आजकल उनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो काफ़ी फुल हैं, तो वो एक अच्छा क्षेत्र है. उसके अलावा जैसे FMCG में है, जहाँ पे थोड़ा डिमांड जो है मजबूत दिख रही है, ऑटोमोबाइल में है सेक्टर. तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उन पर नज़र रखें. Right. वो एक अच्छे निवेश के लिए वो साबित हो सकते हैं. Right. So, when we talk of sectors, if we see market segments and maximum volatility is in the small cap, but that's where the growth story also is there. So in terms of India's, the mid and small caps, do you see them actually holding steady and giving good returns even in the mid to the long term? So Gaurang, if you actually see, we've seen mid caps and small caps also to an extent inch up, and they are also moving with the overall market, sentiment. So it does seem, and if the growth continues the way it has continued going forward, and all the indications are, if you look at the forecasts that have come out, it looks like that story might hold going forward. And if we are talking about a larger market, rally market going northwards further, definitely it will impact the mid caps and small caps. But again, I think these are segments which investors, especially the retail investors,
should touch them with slight caution and actually see individual stocks as an individual company balance sheet before they make a call on them. Well said. Well, listeners, we'll be back with more stories, crude oil, the international markets, but right now a short break. Stay with us. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। रुपए का हाल भी जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 32 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में अगस्त के शुरुआत के बाद गिरकर निचले स्तर 102.75 पर था। दीपशिखा जी, रुपए की कीमत के बारे में आप क्या कहेंगी? और जिस तरह से काफ़ी कुछ स्टेबल है डॉलर के मुकाबले, और उससे हमारा जो पूरी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर कितना असर पड़ता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब जो यूएस मार्केट और यूएस फेड के जो इंडिकेशन है, और ऐसा लग रहा है कि ब्याज दरें वहाँ पर जल्द ही अगले साल से वो घटाना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो फंड्स हैं, फ्लो जो है वो भारत की तरफ बढ़ेगा। और हमने देखा है कि डॉलर में गिरावट आई है और रुपया जो है उस स्तर पे मजबूती थोड़ी उसमें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। उसके अलावा जो फ्लोज आएंगे उससे जाहिर सी बात है कि रुपए में थोड़ी मजबूती रहेगी। तो वही जो है, जो उतार चढ़ाव दिख रहा है रुपए में, वो यही सेंटिमेंट्स जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जानते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स को छोड़कर गिरावट दिखाई दी। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.08%, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.56%, हांगकांग के हैंगसेंग में 2.12% और जापान के निकेई सूचकांक में 0.26% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.81% की बढ़त दर्ज की गई। यूरोपीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में मिला जुला रुख रहा। ताज़ा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक और लंदन का फुटसी दोनों लगभग 0.39% की तेजी पर थे। लंदन के फुटसी में 0.37% की गिरावट दिखाई दी। दीपशिखा जी, आप जो एशिया के बाजारों का अगर हम बात करें तो केवल सिंगापुर को छोड़कर बाकी सारी जगह हमें गिरावट दिखाई दे रही है। ये क्या आपके हिसाब से किस बात के संकेत हैं, क्या कारण है? कुछ लोकल फैक्टर्स हो सकता है कि प्ले कर रहे हों, बट अदरवाइज जो यूएस मार्केट्स में हो रहा है और जो विश्व के बाकी मार्केट्स में है, उसको अगर देखें तो उसको स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगेगा। ये एशियन बाजार भी जो है वही सेंटिमेंट कुछ समय में रिफ्लेक्ट करेंगे जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत टेम्पररी है इन बाजारों का, और कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो प्ले कर रहे हैं इन बहुत सारे मार्केट्स में भी, तो वो वे इन करेंगे कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट्स का है वही आगे रहेगा उस पर। Right. You mentioned the US markets. Let's take a look at them. US stocks ended with modest gains on Tuesday as investors dissected conflicting remarks from the Federal Reserve officials, with upbeat consumer data providing some lift. All three major US stock indices lost momentum as the session progressed, but ended the range-bound session in the green. The Dow Jones Industrial Average rose 0.24%, the Nasdaq Composite Index added 0.29%, and the S&P 500 gained 0.10%. Look at the oil prices. Oil edged higher on Wednesday as investors turned cautious ahead of a crucial OPEC Plus meeting to decide output policy in the coming months, while a supply disruption caused by a storm in the Black Sea provided a lift
lift for prices. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.95 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $76.66 per barrel when reports last came in. Deepshika, the OPEC Plus meeting. Now, what are you expecting as an analyst in that? Are they likely to cut supply to kind of keep the prices in control? Because oil, and a lot of people had forecast the real spiraling of prices, but it's not following that path. So what are they planning to do? Yeah, I think predicting the movement of crude is, I think, the most toughest for any sort of analyst, because there are so many factors that go into crude prices. So we did see some movement in crude prices with the new geopolitical crisis in hand. But overall, because of the demand, it has remained tempered, because the demand has not really gone up as expected. But so is the China story a part of it, because China's demand? Definitely, China's story is part of it, because the entire demand story. Also, if you look at Europe, Europe also is not sort of recovered in that sense. There still are concerns. So, two significant parts of the world still sort of wobbly on the demand side. So that is definitely sort of playing out. And I think at this juncture, OPEC also understands that despite the geopolitical crisis going on, crude has managed to has not really spiked. So at this juncture, I would not like to, preempt what they would go, but definitely for them, it would make business sense to sort of cut production to sort of, let the prices go up. But I think the overall feeling within the policymakers globally is that they should let things settle down and not let inflation spike again, let growth come back. So if that is the sentiment, I guess, we can keep our fingers crossed for tomorrow. Right. और सोने का हाल भी जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 68 रुपए की बढ़त के साथ 62,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। हालांकि दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 39 रुपए कमजोर होकर 75,260 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वैश्विक बाजारों में सोना न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में बढ़त के साथ $2,062.80 प्रति औंस पर था। दिन के कारोबार में चांदी में $25.35 प्रति औंस की बढ़त दर्ज की गई। दीपशिका जी, आप कोई क्विक कमेंट करना चाहेंगे सोने की परफॉर्मेंस को लेके? सोना जो है, अगर आप देखें, डॉलर गिर रहा है, लेकिन यूएस फेड से मिक्स्ड इंडिकेशन आए हैं। लेटेस्ट इंडिकेशन है कि ब्याज दरें कम हो रही हैं, होने की आशा है अगले साल से। लेकिन अगर आप देखें, सोने का जो मूवमेंट है, वो जो विश्व में अनसर्टनिटी है वह रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हमको दिख रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। Right, so gold glittering at the moment, but Deepshika, thank you so much. Listeners, before we close, a look at the headlines. Government extends Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another 5 years. Free food grains to 81 crore people. Nifty reclaims Mount 20,000 after 47 trading sessions. Sensex closes at 66,901. Nifty settles at 20,096. And crude oil edges higher today. Brent trades close to $82 per barrel in global crude market. And that's it in this program. Namaskar. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani,
The news read by Aprajita Snatak. The government has extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for another 5 years from 1st of January 2024. Under the scheme, 5 kg of free food grains are being provided per month to over 81 crore poor in the country, and Antyodaya households get 35 kg of free food grains per month. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said this historic decision places the Ann Yojana amongst the world's biggest social welfare schemes aimed at ensuring food and nutrition security at an estimated cost of 11.80 lakh crore rupees over a period of 5 years. The cabinet also approved a central sector scheme for providing drones to the women's self-help groups. Mr. Thakur added that the cabinet also cleared the term of reference for the 16th Finance Commission. The Union Cabinet has also approved the continuation of the fast-track special court for further 3 years. It has been extended till 31st March 2026 with financial implications of over 1952 crore rupees. The central share is to be funded from Nirbhaya Fund. The scheme was launched in 2019. The United National Liberation Front UNLF signed a peace agreement with the centre and Manipur government in New Delhi today. UNLF is the oldest valley-based armed group of Manipur. The peace agreement marks the end of a 6-decade-long armed movement